channel, and I hope that you all are doing absolutely amazing. And for those who are in Canada, I hope you guys are enjoying the snow very well, because I don't know about other regions, but Toronto में and like North York, Scarborough, I guess even Brampton as well, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ रही है. Like काफ़ी ज़्यादा से I mean like बहुत ज़्यादा. I'm shooting this video when I'm already home, when I already faced the snow. Just because I wanted to show you all कि snow में क्या scene होता है, कैसे हो जाता है सब कुछ, and how difficult it becomes to just travel from one place to another because bus service totally shuts down. Even I doubt the subway sometimes because आज subway भी कहीं कहीं पे बंद हो गई थी. So this vlog is just like a mini vlog. I didn't really plan to vlog this one, but I really wanted to show कि आज क्या क्या हुआ मेरे साथ. So let's get into the video, and I hope you guys will enjoy it and get to see Canada की अलग ही side कि Canada snow में कैसा दिखता है. जो स्नो आपको वाइट वाइट दिखती है ना दूर से, एंड विच लुक्स लाइक वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, उस स्नो को एक्सपीरियंस करना, उस स्नो में चलना, इट्स totally opposite of it. So let's get into the video and let's see how it goes. Make sure you stick to the video and subscribe to my channel. It's March. Oh my god. March of death. A little bit of death on the side. Oh my god. This is how bad the snow is. Okay. People already done it before us. Look. We're following their footsteps. Someone is actually trying to shovel the snow. Yeah. I don't think that's worth it. At this point, I was totally walking in the opposite direction, so snow was falling right on my face, inside my eyes, and yes, I tripped over here. I slipped, and that was kind of bad. Also, you cannot recognize me because I'm wearing way too many layers. The bus slipped actually. No, that's not working, it slipped. And then there's another bus. Yes. Oh no. The weather is actually really bad. The bus which I usually take coming from work, oh my god, the bus which I usually take is scheduled, which means that it is not going to run. So there's no bus service for that bus. You can see it's, oh my god, the weather is so bad. I see like 3 consecutive buses stuck. I don't know how I'm gonna go home. The Uber is costing me like around $100, even more than that. It's getting bad. It's getting really bad. It's not that cold. I mean, it is still cold, but the bus service is hilarious. It's so bad. It's been 1 hour since I finished my shift, and now I'm trying to go home, but I can't. My phone screen is really wet right now. Everything's stuck. Everything's stuck. I hate this. I had to get off at the subway station and change my whole route to go home. And the worst thing is that it took me 1 hour from my work to get to the bus because I changed the route. Also, the bus service was bad, and I walked all the way to the subway station. Just imagine how bad it was, how worse it was. Now I'm like waiting for the subway. I hope it comes. So I am like finally able to reach home, more than halfway. Just last bus leni hai.
I don't know why this subway station smells like जैसे बारिश के बाद खुशबू नहीं आती है मिट्टी की, वैसी खुशबू आ रही है. So I'm kind of feeling nostalgic as well. But anyways, it was a hard journey. बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, बहुत ज़्यादा, like literally बहुत ज़्यादा. I was in the subway for like 30 minutes. Change करना था, पहले line 1 ली, then I took line 2 and I don't know what's the situation outside. I'm going to देखता हूँ क्या है. So I just got home. I don't know if you can see me properly, but snow रुक चुकी है. The good part is, but कनाडा की ये बात है कि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है. Like when I boarded the subway, और उससे पहले जब मैंने बस बोर्ड करी थी तो it was heavily snowing, but अब snow start हो गई है. But the weather still says like कि सारा दिन बारिश पड़नी है. Like as you can see here, ये सारा दिन बारिश दिखा रहा है. And the temperature is dropping and dropping. Just see कि कितना माइनस में जा रहा है. -10, -6, -10 again. So जी, I just got home from work and मेरी शिफ्ट 4 बजे ख़त्म हुई थी, like around 4 बजे. एंड निकलते निकलते मुझे 4:30 हो गए बिकॉज आई वॉज लाइक वेटिंग फॉर द बस फॉर 15 minutes स्नो में, बट नो बस वॉज कमिंग. एंड देन सडनली एक लेडी निकल रही है कार में से एंड शी सेड लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम दैट साइड, आई डोंट सी एनी बस देयर, like not even a single bus. So I had to go back to work and then take another route जो कि मैंने 4:30 बजे लिया. मैंने पहले 15 to 30 मिनट्स की वॉक करी बस स्टॉप तक जाने के लिए, जस्ट बिकॉज स्नो के कारण वॉक टाइम ज़्यादा हो गया था. एंड आई रियलाइज कि वहाँ पर जाके बस ही नहीं आएगी बिकॉज ऑल द बसेस आर स्टक. एंड लाइक जैसे सारी बसेस फंसी हुई थी स्नो में, सो आई हैड टू वॉक ऑल द वे टू द सबवे स्टेशन, और जो कि एक्स्ट्रा 15 to 20 मिनट्स की वॉक थी एंड विच वॉज वेरी हार्ड. वॉकिंग इन हेवी स्नो इज़ लाइक, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट इफ़ यू हैव एवर वॉकड इन वाटर तो आपको समझ आ जाएगा कि स्नो में चलना कैसा फील होता है. लाइक माई फीट आर एक्चुअली पेनिंग राइट नाउ एंड माई हेयर दे वर ऑल वेट एंड दे स्मेल रियली बैड बिकॉज स्नो पिघल के एट द एंड वो पानी बन रही थी. एंड द फर ऑन माई जैकेट इट वॉज ऑल फ्रोजन एज यू सॉ अर्लियर. वो भी जब मैं बस में बैठी बिकॉज इट वॉज हीटेड अप, हीटर था बस में, सॉरी हीटर था बस में, सो उसके कारण वो सब मेल्ट हो रहा था एंड इट वॉज ड्रिपिंग लाइक दिस. लाइक टुडे कमिंग बैक होम फ्रॉम वर्क वॉज अ रोलर कोस्टर. लाइक ट्रस्ट मी, इट वॉज अ रोलर कोस्टर. Also, I wasn't actually planning to vlog today, but the snowstorm was really bad, so I thought why not vlog today. And मैं सबको अपने channel पे actually मैं दिखाऊँ कि what it feels to go to work in Canada when it's snowing really hard, because अच्छी चीज़ें सब दिखा देंगे, ये चीज़ें कुछ लोग ही दिखाते हैं. So I thought I should show you all कि actually में snowstorm कैसा होता है. And now the temperature is around 0 degrees, so it's falling throughout the week. It's going to -14, -20, and it is, when it is like -14, it isn't actually -14, it feels like -20, -21. So I can actually imagine how bad it is going to be, how cold it is going to be. My hands are still frozen and they are still shaking because बाहर काफ़ी ठंड थी. एंड आई एम ग्लैड आई एम फाइनली होम सेफ, बिकॉज एक टाइम पे मैं एक्चुअली में हिम्मत हार गई थी कि भाई आज मैं 8 या 9 बजे से पहले घर नहीं पहुंचने वाली हूँ. आई एक्चुअली हैड टू गो समवेयर एल्स ऑल्सो आफ्टर वर्क. आई डिक्लाइंड दैट एज वेल. आई कैंसल्ड इट बिकॉज बस ही नहीं आ रही थी, सो आई वॉजंट एबल टू गो देयर. बाकी Uber was costing like around $102, which is way too expensive, like way too expensive, जो कि normally मुझे around $30 में मिल जाता है. The surge was so high because of snow कि वो $100 की Uber हो रही थी. Like I didn't feel like it was worth it. It was worth spending $100 on an Uber just to get home. So I just threw that option away and decided कि yeah, let's find another way and head home.
बाकी आई होप यू गाइज लाइक दिस मिनी व्लॉग एंड आई होप कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा देख के, कुछ देखने को मिला होगा. तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो मेरी वीडियो को एंड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो व्हाट डू यू गाइज थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई नो वीडियो इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द एग्जैक्ट जस्टिस what I felt like, yeah, what I experienced, but still, even if I gave a glimpse of it to you, make sure you guys commented and make sure you guys let me know about it. Till then, I'll see you guys in the next vlog and take care, bye bye, and stay safe. Those who are in Canada, stay safe. Wear your winter boots, जो कि मैंने आज नहीं डाले थे. I did a mistake, I know, but yes, my other boots were comfortable enough to keep me warm and they were kind of non-slippery, so yeah, I survived it. But those who are in Canada, stay safe and take care of yourself.